Okay, so let's start with the question number 6. The two spheres carrying a charge Q are hanging from a same point of suspension with the help of thread of the length 2 meter. Okay, suppose thread की length है वो 2 meter जितनी है, that is given. Okay, in the space free from the gravity, the distance between them will be. Okay, we want to find out what will be the distance between the two sphere जो उसके ऊपर हमने चार्ज Q को रख दिया. This is the question. Okay, so now just look at here. I am going to draw this one. कि suppose हम ऐसा बोलते हैं कि suppose this one sphere number 1, this one is the sphere number 2. Here charge Q, here charge Q. Same suspension is given, so you can say suppose हमने ऐसे उसको connect करके रखा है, ये ऐसा है, and now this one is like this. Here the angle theta is going to be formed. Okay, you can see कि whenever the string will be there, there will be the tension. Tension means the force is going to be act. Okay, so suppose we are going to consider L length, but length is given, that is 2 meter, but there is a theta, so we have to consider the component part. So can I use कि from this mid, this distance will become L sin theta. This other distance is again यहाँ से यहाँ तक का L sin theta. So the total distance, can I say 2L sin theta. हमको ये तो पता चल गया है कि distance that can be 2L sin theta, but what will be the theta, that we are not knowing. So just look at here. For the equilibrium position, we can say here that T cos theta is equal to 0 for the vertical force. T cos theta is equal to 0, T that is tension acting on the string. So can we say cos theta is equal to 0? कौन सी वैल्यू पे cos की कौन सी वैल्यू पे थीटा है वो 0 मिलेगा. You can say theta is equal to 90 degree. Right? So we are getting the 90. So just look at here. हमको distance तो पता चल गया है कि D is equal to हम क्या लिखते हैं 2L sin theta. In the place of theta we have to put the 90 degree. In the place of L we have to put the 2 meter. Okay. So D is equal to 2 into 2 sin 90 degree. Sin 90 means 1. So 2 into 2 that will be 4. So ये जो दो स्फीयर है उसके ऊपर जो हमने चार्ज रखा है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए. It should be 4 meter. So you can see from the option C is going to be correct one, that will be 4 meter. Okay, so let's start with the question number 7. When an electron and a proton are placed in a uniform electric field. Okay, so there are the 4 options are given. You can see the 4 options. We have to choose the correct one. दो particles दिए गए. One is the electron, second one is the proton. Just we are going to see the charge of the electron, that will we are taking 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Mass of the electron, that will be 9.1 10 to the power minus 31 kg. Okay, so just look at here. If we are going to take according to the option, you can see we can use the force is equal to MA. Suppose we are going to see force is equal to MA, and if I am making the subject of formula A here, so it will be F by M. Okay, so you can see if that is F by M, mass of proton, suppose I am going to write here it is proton acceleration. So I have to use here proton mass. Suppose I am going to use electron, so AE is equal to F divided by ME. So from this equation you can say यहाँ पे mass of proton is different, mass of electron is also different. ये दोनों different है तो दोनों का acceleration तो कभी same हो सकता नहीं है. So look at with the option C, the acceleration produced in them are same. So that one is the wrong. कि mass ही different है, so acceleration that cannot be same. Now
यू कैन सी द फोर्स, हमारे पास ये जो दो चार्ज पार्टिकल है उसको हम कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स भी एग्जर्ट होगा। तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इफ वी आर टेकिंग इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम बोलते हैं वैसे -1.6 10 to the power -19, पर हम जनरली न्यूमेरिकल में 1.6 पॉजिटिव वे में लिखते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में। सो इफ आई एम टेकिंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज -1.6 की जगह पे +1.6 ले ले और यहाँ पे भी +1.6 10 to the power -19 ले ले, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की साइन है वो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यू कैन सी फ्रॉम द ऑप्शन हियर the magnitude that is of the force are going to be same, and the option A you can say magnitudes are equal as well as the direction, but direction is not going to be equal because of the polarity of this charge. So what will be the correct one? You can say the option B is going to be correct answer, that is only the magnitude of the force are going to be same. Okay, so let's start with the question number 8. The force between the 2 point charges. Okay, 2 point charges are given. Okay, they are going to be separated by some distance that is not given, but the force is given, that is the 5 Newton. Okay, now the magnitudes of the charges are going to be double. Okay, magnitude का charge है वो double हो रहा है, and the distance between them is going to be half. Okay, so the distance is going to be half, then we have to find what will be the force. This is the simplest question. Just we have to recall the formula of the Coulomb's law. If you are going to recall the formula of the Coulomb's law, that will become easy. So just look at here, we are going to write down first Coulomb's law, that F is equal to K Q1 Q2 by R square. Just I am going to say that K, what will be the value of the K? That nothing but 9 into 10 to the power 9. What will be the unit? Newton meter square by Coulomb square. Okay, so just look at here, we are having the force that is 5 Newton. So just I am going to put 5 is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Now we are giving this equation number 1. Okay, now the second statement we have seen कि magnitude of the charges are going to be double. So can I use Q1, that is nothing but 2 times of Q1, I am giving the new name Q1 dash, and Q2 dash, that is also 2 times of Q2, and the R dash, that will be R divided by 2. Okay, so you can use again force that we are calling as F dash is equal to K Q1 dash Q2 dash divided by R dash square. Okay, now it will be easiest. सिर्फ हमको क्या पुट करना है, वैल्यूज पुट कर देना है. तो F dash is equal to K in the place of Q1 dash, that will be 2Q1, in the place of Q2 dash 2Q2 divided by R dash square, that will be R divided by 2 whole square. Okay, now we are going to solve this one. F dash is equal to, you can say 2 into 2 4, and R square divided by 2, denominator is going on to the numerator, so 4 2 का स्क्वायर 4 वो भी ऊपर चला जाएगा. So you can say 2 2 4 and again the 4 will be there, so 16 हो जाएगा, that will be 16 K Q1 Q2 divided by R square. So you can see from the equation number 1, equation 1, that is K Q1 Q2 by R square is equal to 5 लिखा है. सो क्या हम यहाँ पे ये K Q1 Q2 by R square की जगह पे 5 पुट कर दे, हमको तो फोर्स मिल जाएगा. सो F dash is equal to 16
into 5. So F dash will be 16 5 80 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगेगा जब चार्ज डबल कर रहे हो एंड सेपरेशन हाफ कर रहे हो तब? So you can say 80 Newton, that can be answer. So according to the option you can say, and the option D 80 is going to be correct one. Okay, so let's start with the question number 9. That one is also easier. A point electric charge Q is placed at a point P. Okay, suppose कोई Q charge है वो P point के नजदीक पे रखा है. Suppose we are considering here it is P point and Q charge हमने कहीं पे रखा है. Okay, a closed surface is placed near the point P. एक closed surface हम ड्रॉ कर रहे हैं that is near to the point P. वो कहाँ पे? Suppose ऐसा समझ लेते हैं कि नियर टू पे, सपोज यहाँ पे कहीं पे क्लोज्ड सरफेस हम बना के रख रहे हैं. देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर विल बी. ओके, फ्लक्स हमको फाइंड करना है. फ्लक्स दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर दैट वी आर गोइंग टू यूज. ओके, सो कैन वी यूज, we are having the Gauss law 5 is equal to summation Q in डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. मीन्स जो भी क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर जितना भी चार्ज है वही हम कंसिडर करेंगे. सो लेट्स पुट हियर, सपोज यहाँ पे Q इनसाइड की ही हम बात करने वाले हैं. कहीं पे भी जाओ गॉस लॉ इनसाइड चार्ज ही लेना है हमको. सो यहाँ पे तो आप देखो कि ये क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है. इफ चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या बन जाएगा? 0, बिकॉज Q इज इक्वल टू 0 है हमारे पास. Q तो हमने क्लोज्ड सरफेस के साइड में रखा है, वो इनसाइड तो है नहीं. सो दैट फ्लक्स क्या हो सकता है भाई? हमारा फ्लक्स हो जाएगा 0. So you can see according to the option T is going to be correct one, that is 0. Okay, so let's start with the question number 10. The linear charge density on the circumference of the circle of radius A is very lambda is equal to lambda naught cos theta. So we have to find what is the total charge on the circle. So just look at here. Suppose I am going to draw a circle that has the radius A. I am going to draw a small angle, considering the small angle d theta here. And this one is arc, we are considered as a dl. Now linear charge density that is given, lambda is equal to lambda naught cos theta. Okay, what is the basic formula of the linear charge density? The linear charge density that is nothing but we can write like this, lambda is equal to dq divide by dl, means small amount of charge that is going to be spread out on the dl length. dl length में suppose चार्ज है वो स्प्रेड आउट हुआ है, वो क्या मिल जाएगा? लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा. यहाँ पे अभी देखना है, ये तो dq चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, बट वी वांट टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. Okay, so if I am making the subject of formula dq here, you can say dq is equal to lambda dl. This one is the equation number 1. Okay, so you can see here dq is equal to lambda dl. In the place of lambda we can put the lambda naught cos theta. So here dq is equal to lambda naught cos theta into dl. But just look at here, the lambda is going to be vary with respect to theta. तो ये जो dl है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा एंड रेडियस के टर्म में. So you can say according to this figure, from this figure you can write dl, that is nothing but it will become a into d theta, right? Radius into the angle. Okay, so suppose this one is your equation number 1, this one is your equation number 2. We are going to put the value in the 1. So dq is equal to lambda naught cos theta into a d theta. I am just rearranging the term.
और हमको डी क्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन टू द बोथ द साइड। So just taking the integration here, I'm taking the integration over here, so you can see dq small amount of charge है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई यहाँ पे टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। यू कैन जस्ट लुक इट हियर, लैम्बडा नॉट एंड a तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अच्छा, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी होगा, जस्ट लुक इट हियर, थीटा है वो 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कमफियरेंस हमको लेना है, पूरा सर्कल हमको घूमना है। तो Q इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ए, वो तो बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचने वाला है कोस थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई। ओके, सो Q इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ए कोस थीटा का इंटीग्रेशन, दैट वी आर राइटिंग साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक की लिमिट, 0 से 2 पाई तक की लिमिट है। तो यहाँ पे देखो हम क्या पुट करेंगे, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Q इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ए, फर्स्ट वी आर गोइंग टू पुट साइन 2 पाई डिवाइड माइनस साइन 2 पाई माइनस साइन 0, so sin 2 pi is also 0, sin 0 is also 0, तो ये दोनों 0 है, तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा क्या बन गया है, 0 बन चुका है। तो नाउ यू कैन लुक इट विद द ऑप्शन पार्ट। सो ऑप्शन बी is going to be correct one, that will be 0।